समय के साथ इन्वेस्टर्स का बिहेवियर काफी चेंज हुआ है। विद बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ईज ऑफ ट्रेडिंग एंड द यंगर पॉपुलेशंस एफिनिटी फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग, capital markets are witnessing an increase in top-line growth with demat accounts, broking accounts, folio accounts, mutual fund industry AUM, resulting in better margins and profitability. Hi everyone and welcome to Centrishala. My name is Anjali and today we are talking about Tata Nifty Capital Market Index Fund NFO, which is India's first Nifty Capital Market Index Fund. ये NFO 7th October 2024 को open हुआ था and it will remain open till 21st October 2024. अब जानते हैं कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कैपिटल मार्केट थीम्स में। इंडिया का म्यूचुअल फंड AUM to GDP रेशियो is 16%, which is low as compared to global average of 74%, with Australia at 192%, USA 145%, Canada और फ्रांस 103%, UK at 85%, Brazil at 67% and China at 19%. This shows that being a developing nation, India has immense growth opportunities. Secondly, demat accounts India में 3 times grow हुए हैं over the past 5 years, 20 million से 160 million तक. This is a reflection of growing interest in the stock market and financial products, yet it is a small fraction of the population, which indicates a large upside potential. However, demat accounts के growing number के बावजूद भी Indian equity market usually underpenetrated है, with demat penetration at only 8%, as compared to USA जो 32% पे है and China जो 14% पे है. Thirdly, mutual fund assets have moved up to 35% in fiscal 2024 to a new high, leading to mutual fund folios doubling in 5 years at 20 crores in August. Lastly, India's SIP ecosystem अभी भी काफी मजबूत है. India's SIP adoption continues to rise and it has touched approximately 2 lakh crore in fiscal 2024 और SIP के number of accounts भी nearly 8.4 करोड़ तक आ चुके हैं. अब बात करते हैं निफ्टी कैपिटल इंडेक्स के बारे में. तो निफ्टी कैपिटल इंडेक्स कैप्चर करता है फुल इकोसिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. ये कवर करता है exchanges and data platforms at 32%, asset management companies at 26%, depositories and RTAs at 22%, stockbroking entities at 17%, and lastly wealth management firms at 3%. अगर लास्ट 3 साल के टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो वो 20 to 25% है, which is weighted average for the index, leading to a 30 to 40% PAT growth. As these segments are asset light with near to zero debt on their balance sheets, running a good operating leverage as top line rises and cost rises much lesser. Thus, these businesses have seen better margins and profitability. Financial year 25 and 26 में earning growth जो है काफी healthy रहेंगी, approximately around 20 to 25% at portfolio level. अब देखते हैं इनके index constituents. इनका यूनिवर्स निफ्टी 500 है. अगर इनके स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो ये 20 एलिजिबल स्टॉक सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. इनका स्टॉक कैपिंग है अप टू 20%. आइए अब जानते हैं इनकी स्कीम डिटेल्स. तो स्कीम टाइप इनका एक ओपन एंडेड स्कीम है रेप्लिकेटिंग और ट्रैकिंग निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स. इनका एग्जिट लोड 0.25% है ऑफ द एप्लीकेबल NAV if redeemed on or before 15 days from the date of allotment. Minimum subscription amount ₹5,000 है with fund manager Kapil Menon. So this was all about the Tata Nifty Capital Market Index Fund NFO. Well, thank you so much for watching this video. Stay tuned.